back to another stream. So in this video we are going to cover the basically in this series of the video 5-6 वीडियोस होने वाली जिसमें मैं कवर करूँगा गेम रिलीजेस ऑफ सितंबर और उसमें से the biggest one is Counter Strike 2 which you are able to see on the screen right now. So Counter Strike does not need any introduction. We have been playing it for a long time. CS खेला, फिर CS2 खेला, 1.6 है, Source है. तो भाई काउंटर स्ट्राइक तो काफ़ी लोग खेल चुके हैं पहले से एंड वो वॉज लाइक काफ़ी टाइम तक वो चला. इट वॉज अ डेकेड लॉन्ग गेम. तो बेसिकली कम्युनिटी पे इट वॉज लाइक कि दे शुड रिवैम्प इट, दे शुड उसके ग्राफिक्स को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, दे हैव टू इम्प्रूव द ग्राफिक्स एंड ऑल. तो इन्होंने काउंटर स्ट्राइक 2 में काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट किया है नया. व्हाट इज़ इट, लेट्स चेक. तो वी आर एट स्टीम नाउ. वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले द गेम. मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है. तो लेट्स फर्स्ट चेक आउट द ट्रेलर. For over 2 decades, Counter-Strike has offered an elite competitive experience, one shaped by millions of players from across the globe. And now, the next chapter in the CS story is about to begin. This is Counter-Strike 2. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. बेसिकली ये इस वाले वीडियो पे ये बताने वाले हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस नहीं किए. उस वाले में तो हमने ग्राफिक रिलेटेड देखा बट इस वाले पे मुझे बेसिक दिखेगा. मैंने खेला है, मैं बताऊँ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था. फ्रेम डिफरेंस से कुछ खास फर्क पड़ रहा है बिकॉज मेरा पूरा सेटअप है 3060 का एंड 360 हर्ट्ज मॉनिटर है. तो उस वाले से मुझे पता चल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप तो नहीं दिखा. मतलब है हल्का डिप था बट लेट्स सी. Now, firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting. Between mouse, keyboard and basically when you press the click, उस टाइम पे वो उसी टाइम पे वो click register हो रहा है या नहीं. I think that is it what we're trying to say. So the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peeked your peek, and the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. When you register the shot, वो exact time पे सर्वर पर रजिस्टर हो रहा है या नहीं. वैलोरेंट पे तो भाई बहुत ज़्यादा डिप है, आपका सर्वर के पिंग पे डिपेंड करेगा. बट आई थिंक उन्होंने इसमें इम्प्रोवाइज़ किया है और ताकि ज़्यादा हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी ना हो. With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry. You can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. We took 3 approaches to improving maps while retaining their rich legacy. First, there are touchstone maps, classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from CSGO to Counter-Strike 2. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting, and reflections.
and finally, overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment, and iterate. With upgrades to lighting, player read, and materials in Counter-Strike 2, even the familiar will feel brand new. Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Smoke grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. It reacts to lighting, grows to fill spaces naturally. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. They're just going to look and play better. इंस्टॉल हमने कर रखा है, चलते हैं अपन करेंगे प्ले। काफ़ी सारे गेम्स हैं, लेट्स जंप लेट्स स्टार्ट प्लेइंग। तो भाई गेम प्ले भी हम ऐड करने वाले हैं इस वाले वीडियो पे एंड देखूँगा विल ट्राई टू सी। अच्छा अचीवमेंट बस एक ही अचीवमेंट है इसमें, खेल तो रखा है हमने। पे चलते हैं, रैंडम मैच खेलेंगे कुछ टाइम के लिए अंदर। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। वीडियो को ज़्यादा एडिट करेंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं रखना, बट भाई गुड गेम, मतलब काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया है इन्होंने कंपेयर टू वैलोरेंट एंड ऑल। वरना वैलोरेंट को कंपेरिजन में इसको डेड गेम बोला जा रहा था। चालू है वो आपका CVB या की का वो नंबर का वो हट गया है, की का लेटर मैच प्लीज अनसेलेक्टेबल फॉर अ टाइम आफ्टर चिकन को मारो।
आ जाओ। भाई इधर उधर कील लेने करके भाई अपन करेंगे यहाँ पे एंड। और छोटी कर लिया अपन, खेल लिए भाई, तो इट इज़ गुड, इट इज़ क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू CS2। CS2 मैंने उतना तो नहीं खेला, थोड़ा बहुत खेला था, बट ठीक है, इट्स गुड। तो भाई वी आर गोइंग टू कवर लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ गेम्स, अपकमिंग गेम्स। डिज्नी स्पीड स्टॉर्म है जो इसको मैं कवर करने वाला हूँ, तो ये भी वन ऑफ द गेम्स है जिसको मैं कवर करूँगा। दैन वी हैव EFC 24 करना नहीं है मैंने, बट मैं सोच रहा हूँ कर दूँगा। जॉयपैड है नहीं, मुझे मंगवाना पड़ेगा घर से, तो करता नहीं है। ब्लैक फ्राइडे का ऑब्वियसली दाम बढ़ जाता है और वर्थ इट तो नहीं है EFC वैसा, तो भाई ठीक है, उसके बाद हमारे वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वाले वीडियो पे इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो पे। टिल देन दिस इज बाय फ्रॉम chaos and see you in the next video.